Hello students. In the previous video, we have studied about chemical formula from atoms and molecules, but we have seen some simple molecules, how to form some compounds with simple nomenclature, right? Only we have read about only the atoms or the ions which contains only single atom or single ion species. Today we will study polyatomic ion species together with the single atomic ion. Now, today's topic is also same chemical formula, but with the polyatomic ionic species. ठीक है? Polyatomic ions मैंने आपको बताया था. What is the polyatomic ions? Polyatomic ions क्या होते हैं? जिसमें एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हों और उनपे कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट हो. एग्जाम्पल के तौर पे वी कैन सी कार्बोनेट आयन. It contains one carbon, three oxygen, on which they have two negative charge, right? Clear hai? This is the example of polyatomic ion. We have some more examples like sulfate, SO4, 2 negative, phosphate, PO4, 3 negative, nitrate, NO3 minus. Yes, clear hai? Now we are taking some examples for making such formula using these polyatomic ions. One example is if we are making potassium sulfate. I am writing potassium sulfate is one of the example. Now we can see the symbol of potassium. The same way we will do it exactly the previous one. सबसे पहले potassium का symbol is K positive, sulfate का symbol is SO4 के ऊपर 2 negative का charge, right? Now the same step will done element and here we will write charge. Element इसका सिर्फ element का मतलब क्या है कि आपको यही species as it is copy कर देनी है without any charge. Then potassium आपने as it is copy कर दिया, इधर आपको ये species copy करनी है but without this charge. तो SO4. Yes, clear है? नाउ इसका चार्ज यहाँ पर हमें लिखना है. इस पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज था? प्लस का. अगर इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा है इसका मतलब 1 चार्ज है. इसके ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ है क्या? 2 चार्ज है, राइट? नाउ वी विल सेम सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लाइड. पोटेशियम को मल्टीप्लाई विद 2 एंड सल्फेट विल बी मल्टीप्लाई विद 1. देन इट विल बिकम K2 SO4 और SO4 पूरे का 1. और मैंने क्या कहा था आपको कि अगर 1 सबस्क्रिप्ट में है तो you no need to write this. You can simply write it down as K2SO4. This is the final formula of this compound. Yes, clear hai? Okay. Now I am giving you another example. Calcium carbonate. Yes, this is very important. Calcium carbonate. Now tell me, calcium को हम किससे डिनोट करते हैं? Ca+2 से. The denotation of carbonate is CO3, 2 negative, right? आपने क्या करना है? एलिमेंट लिखना है, यहाँ चार्ज लिखना है. एलिमेंट क्या है? कैल्शियम. और इसका एलिमेंट क्या होगा? CO3. जो ऊपर वाला चार्ज है, you have to leave it. Now write down the charge below this symbol. कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है? Tell me. 2. कार्बोनेट के ऊपर चार्जेस 2 again. Now we will cross multiply it. We know that it becomes calcium 2. ठीक है? और कार्बोनेट पूरे का twice, right? अब I can see ये इससे कट सकता है. ठीक है? We can cut it on table of 2. 2 ones are 2 and this is also 2 ones are 2. तो then 1 आ गया. 1 को I have said कि लिखने की कोई नीड नहीं है. Then the final formula will become calcium carbonate. Yes? Is it clear? Now, the next example we will study. This is the last example for this and just tell me, आपको कोई और topic में doubt है, you can comment below this video. And I'm just writing one more example. Then we'll finish this topic also and tell me whether this topic will be clear to you or not. Now I'm giving you example of calcium phosphate. Calcium phosphate.
कैल्शियम का सिंबल इज Ca+2, फॉस्फेट का आई हैव टोल्ड यू PO4 3 नेगेटिव। इसके लिए हम यहाँ पर एलिमेंट और इधर चार्ज लिखेंगे, कैल्शियम के ऊपर और फॉस्फेट के ऊपर। कैल्शियम के ऊपर 2 चार्ज है, फॉस्फेट के ऊपर 3 है। देन वी क्रॉस मल्टीप्लाई इट, तो कैल्शियम बिकम 3 एंड फॉस्फेट पूरा का पूरा बिकम्स ट्वाइस, यानी कि PO4 बिकम्स ट्वाइस। अब वी कैन सी, हम इसको किसी कॉमन टेबल से कट नहीं कर सकते, so will not cut this. This is the final formula. Yes, it is clear. Now tell me, this topic is complete for chemical formula for the simple ions as well as including polyatomic ions. I have completed it right here. Now you can tell me, अगर आपको किसी और टॉपिक में डाउट है तो आप उसे कमेंट कर देना, आपको जिस भी टॉपिक की वीडियोस अवेल करानी है। Thank you so much. Now we'll over the class. Subscribe the channel and share it.